Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. This is Debjani and you are watching Debjani classes. My dear students, today we are going to study class 6 SST chapter 2 Oceans and Continents. So, let's start today's class. Oceans और continents विषय आमे यदि अल्प टिके किसी जानिछे बा सुनिछे तो हम एलाबोरेटली आज तक आमे भल भाव में बुझा ये चैप्टर कौन कौन में पढ़ा बिग क्वेश्चंस अच्छी व्हाट आर ओशंस एंड कंटिनेंट्स व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन व्हाट वेज डू ओशंस एंड कंटिनेंट्स इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ. Let us return to our globe and rotate it gently. पिला मैंने आम आम ग्लोब को जदि टिके रोटेट करिबा और लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम द मून एवं मून रो जो फोटो उठा जायछि अर्थ रो ताको जदि हम भल भाबरे देखिबा व्हाट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी तमे ताले एई पूरा एती जो विस्तृत अंचल तुम केउ कलर करा जायछि तुम जानि परिबो. चलो आमे ताको आम ग्लोब को देखिबा. देखो एठी ग्लोब रो किछि पार्ट्स देखैछि. अच्छा एई जो ग्लोब्स रो पार्ट उडाक केउ केउ कलर करा जायछि. देखो एई पार्ट एते सब विस्तृत पार्ट उडा सब की कलर करा जायछि निश्चित भाव रे कलर को जानि पारुथिबो. कलर टी अछि ब्लू कलर नै. You must have guessed the answer. तम निश्चिंत भाव में आंसर पाई जीवनी. It is water. ये जो ब्लू कलर ए ब्लू कलर रिप्रेजेंट करुछि काहा को ऑब्वियसली वाटर को नहीं. दिस मीन्स यार माने कोन ना दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज एक्चुअली कवर्ड विथ वाटर. इज एक्चुअली कवर्ड विथ कोन वाटर. Almost 3/4 of the surface, in fact, right? तो 3/4 मान चारि भाग रु 3 भाग होची water. That is why when ए कारणरू when seen from outer space आमे तले बाहर देखिबा the earth appears mostly blue. से कारणरू हमको बतले बाहर आमे देखिबा अर्थ को हमको अर्थ देखा जीवो ब्लू कलर भली. सो इंडीड इयरली एस्ट्रोनॉट्स लविंगली कॉल्ड द अर्थ द ब्लू प्लैनेट. सेथि पे हमरो जो पूर्वरु एस्ट्रोनॉट्स माने थिले से माने अर्थ रो ना देथिले ब्लू प्लैनेट. द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशंस. ग्लोब रे आमे जो देखुने एते बड़ ब्लू कलर रो जो वाटर बॉडीज ताकू आमे कोन को मोस्टली ताकू आमे ओशन बोली कहि थाउ. बट इन द पिक्चर ऑफ द अर्थ यू कैन सी एट लीस्ट वन अदर कलर. आ गोटे कलर मध्ये तमे देखिथिबो निश्चित भाव रे. देखो तमे ब्लू कलर छड़ा आउ केउ कलर देखिचो. देखो एटा गोटे अलगा कलर देखिचो. एगुडा तो सब ब्लू कलर. एटा होची ब्राउन कलर नहीं. ब्राउन कलर देखिचो. दिस कलर इज दैट ऑफ लैंड. ए कलर टा काहा को हम इंडिकेट करछ बा रिप्रेजेंट करूछ. एटा होची लैंड व्हिच कवर्स अ लिटिल ओवर 1/4. आमे देखिले ना वर्तमान ग्लोब रे बहुत भाग माने 4 भाग 3 भाग होची वाटर जेटा ब्लू कलर हेची आउ ब्राउन कलर खूब कम हेची जेटा लैंड मास सेटा होची 1/4. A large body of land is called land mass and a large continuous expanse of land is called continent. तो हमें continent बोले कहता हूँ. Both oceans and continent, ये ocean हो कि continent हो, play a vital role in shaping the climate of the earth.
They affect all aspects of life including all plants and animals. এই ଆମର ଓସନ୍ ହଉ କି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ହଉ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଓସନ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ବୋଥ୍ ଆମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଆନିମାଲ୍ ମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଫର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍ ଠୁ ମଣିଷ ସମାଜ ମଧ୍ୟ we see their impact throughout our history and culture and in our daily life। ତମେ ଯଦି ଆମ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହଉ ଆମ କଲଚର୍ ହଉ ଦେଖିବ ଏମିତିକି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଓସନ୍ ଆଉ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି। The emblem of the Indian Navy contains the motto Sam no Barun, pronounced Sam no Barun, which means be auspicious to us, O Barun। ଆର ମାନେ ହେଉଛି ତମେ ଏ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ବହୁତ ଅସ୍ପିସିୟସ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନୋଭୋକେସନ୍ to Barun, a Vedic deity associated with the oceans, the sky and water in general। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏଇ ୱାଟର ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଇଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର and land on the earth. As it happens, oceans and continents are not distributed equally between the northern and southern hemisphere। ଆମର ଦେଖ ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ଆଉ ସଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ସମାନ ଭାବରେ କିଛି ବଣ୍ଟା ଯାଇନାହିଁ ଯେ ଏଠି ଏତିକି ଜଳ ରହିବ ସେତିକି ସ୍ଥଳ ରହିବ, ସେମିତି କିଛି ବଣ୍ଟା ଯାଇ ନାହିଁ। Let us examine the two maps in figure 2.2। এই जो हमें देखिले ना figure 2.2 रे এই দুইটা जो देइची मैप। The blue area consists of oceans। आमे देखिबा हमर जो blue area ए जो blue area एगुडा को होची ocean and along with their smaller extensions हम ता भीतर मोर छोटो छोटो blue color जो देइची सेडा सब सी बे गल्फ ता ना सब एम्ति दिया जाई थाए। The oceans together hold most of the water available on the planet। ओशन माने आमर ये जो पृथ्वी माने आमर जो ग्रह रे ओशन अधिक जगह माड़ी बसी। बट दिस सी वाटर एते जगह नबा सत्वे सब जगह सी वाटर इज सल्टी एंड अनफिट फॉर कंजप्शन बाय मोस्ट लैंड एनिमल्स। देख जे एते आमर ग्रह रे एते जल थिबा सत्वे एते वाटर थिबा सत्वे फिर भी सबु जाक वाटर होची माने मोस्ट ऑफ द वाटर होची सी वाटर। 99% वाटर सी वाटर। तो सी वाटर आम जानते सल्टी ताको आम यूज कर परिबा नहीं। अनफिट फॉर कंजप्शन बाय मोस्ट ऑफ लैंड एनिमल्स जो मैंने लैंड एनिमल्स से यूज करिया भारी कष्टकर इंक्लूडिंग आम ह्यूमन मानक मध्य मनुष्य माने मध्य यूज कर परिबानी। ऑन द अदर हैंड यह व्यतीत फ्रेश वाटर मेक्स अप अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन। आम जो फ्रेश वाटर ये बहुत अल्प परिमाण अच्छी मोस्टली 1% अच्छी। प्लैनेट्स वाटर रिसोर्सेस इट इज फाउंड इन देखो ये जो फ्रेश वाटर आम कौटू पाइबा ना ग्लासियर्स रु पाइबा लेक्स रु पाइबा इन द आटमोस्फियर एंड ऑल्सो अंडरग्राउंड आम माटी तले मध्य आम जो जल पाइबा सेटा हला फ्रेश वाटर। ताहले कह एते जल थबा सत्वे फिर भी आम कहीं कह जाउछ वाटर क्राइसिस देखा जाउछ ना आम जानले ना 99% है सी वाटर माने सल्टी तो 1% है फ्रेश वाटर ता पुणी बहुत भू तले रहिला ग्लासियर रे रहिला रिवर रे रहिला ताको सब तो आम कंजप्शन करि परिबानी ना। तो जेतिकी आम ताको यूज करि परिबा सेटा आम पई बहुत लिटिल बहुत टू मच। दैट्स व्हाई हमको वाटर क्राइसिस देखा जाए। Oceans on the world map figure
2.3 on page 32 we can observe 5 oceans. आमे देखिपा जे आमे जो ऑब्जर्व करबा मु देखौछ तुम मानन को एठी तो एठी हमर केतेटा ओशन रहिछि ना 5 oceans रहिछि एठी हमर 5 oceans रहिछि कौन है ना गोटे पैसिफिक ओशन गोटे अटलांटिक ओशन द इंडियन ओशन द आर्टिक ओशन एंड द सदर्न ओशन को मैं अंटार्कटिक ओशन मध्य कही था ऑल्दो वी हैव लिस्टेड 5 ओशंस जदिओ आमे 5टा ओशंस को लिस्ट करिचे इट इज क्लियर फ्रॉम द मैप दैट दे आर नॉट रियली सेपरेट वास्तव में आम मैप को देखिले देखो ये मैप को देखिले एगुड़ा सब सेपरेट कई कहाठारू नाहंती कई कहाठारू कौन नाहंती सेपरेट नाहंती The lines that divide them on the map are no more than conventions. The natural world doesn't allow such boundaries. कौन सी बाउंड्री एक्चुअली समुद्र कौन से ओशन ने कौन सी बाउंड्री वाटर भितर कौन कहीं बाउंड्री दे पारिबो नहीं ना तो खाली अनुमानिक करा जायछि तो सी वाटर फॉर एग्जांपल कॉन्स्टेंटली फ्लो अक्रॉस डिफरेंट ओशंस sustaining a rich diversity of marine life. Many plant and animal species can be found across multiple oceans. विभिन्न ओशन ने विभिन्न प्रकारर आमे सामुद्रिक माने प्लांट आउ एनिमल्स मध्य को माने पाइबा से मानकर लाइफस्टाइल देखिबा पूरा डिफरेंट अछि भिन्न भिन्न रहिछि The marine flora includes tiny plants called algae and all kinds of seaweeds. आमरो जो फ्लोरा मीन्स कौन ना फ्लोरा माने होची छोट छोट प्लांट्स गुड़ाक जोड़ाक सी वाटर देखा जाती ताको आम फ्लोरा कही था द मेराइन फोना कौन ना फोना मीन्स होची एनिमल्स माने जो सी वाटर रे जो एनिमल्स माने देखा जाते लाइक फिश कलरफुल फिश डॉल्फिन्स व्हेल्स काउंटलेस मास्टर्स डीप सी क्रिएचर्स बहुत सारा अच्छी each part of the ocean from the sunlit surface to the dark depths has its own diverse life forms प्रत्येकंकर जीवन शैली भिन्न भिन्न अटे let's explore locate the 5 oceans and in the table below mark the hemisphere and or hemispheres they belong to केउ हेमिस्फीयर रे के कोठी अछि अच्छा पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन ताको तुम मन देखि कि ए ऊपर जोटा देछि ता धर देखि कि ए फिगर रो तमे की को हेमिस्फीयर रे अछि लिखि परिबो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे के अछि नॉर्दर्न देखो सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे बोथ पैसिफिक ओशन रहिछि सदर्न हेमिस्फीयर रे इंडियन ओशन रहिछि तापरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे अटलांटिक ओशन रहिछि आर्कटिक ओशन रहिछि नहीं ए भଳି भाबर रहिछि त मन तको भलो भाबर मैप को देखिबो नेक्स्ट देखिबा oceans and disasters returning to the picture of the earth at the start of this chapter you may have noticed white shapes across the globe did you guess that they are semane gote kon tame guess kari parchu ki they are large masses of clouds oda hochi clouds such clouds bring rain to the continents ei cloud gudiko आमर कंटिनेंट रे कौन करूची ना वर्षा करूची फॉर इंस्टेंस द मॉनसून रेन्स वी इन इंडिया एक्सपेक्ट एवरी समर ओरिजिनेट इन द ओशन आमर आमे भारत रे तो मौसमी वायु प्रभाव रे कौन होची ना वर्षा होची तो प्रत्येक समर सीजन रे पर कौन आसी जाउची ना मौसमी आसी जाउची आ आमर वर्षा कराउची विदाउट सच रेन्स ए रेन व्यतीत without such rains
आवर एग्रीकल्चर एंड ऑल लाइफ विल सफर जदि वर्षा न हो ताले आम प्रत्येक आमर चाषबास एवं आम दैनंदिन जीवन बहुत व्याघात सृष्टि हे बट ओशन्स ऑफन ऑल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म्स मध्य बेले बेले समुद्र रे कौन होता झड़ सृष्टि लघुचाप जनित वर्षा मध्य होछि नहीं winds such as cyclones जमती बात्या होची which can cause widespread damage to coastal regions of the world ये मध्य बहुत क्षय क्षति कराउछि ए साइक्लोन ही जमती उपकूलवर्ती अंचल रे बहुत क्षय क्षति कराउछि जस्ट लाइक अ सुनामी सुनिथिबो सुनामी इज अनदर natural disaster that originates in the ocean सुनामी विषय रे जानिचो एटा होची कोन ना ओशन ने हेतिला को ओशन ने इंडियन ओशन ने हेतिला ना नहीं A tsunami is a natural disaster that originates in the ocean. It is a huge and powerful wave generally caused by a strong earthquake or a volcanic eruption at the bottom of the ocean. माने समुद्र भितरे पानी भितरे कौन है ना भूकंप सृष्टि होती तो सेटा को आम कहूँ सुनामी तार ना कहूँ आम सुनामी तो सुनामी कैन ट्रावेल thousands of kilometers and submerge coastal areas हजार हजार किलोमीटर दूरता को से जाई परिबो causing widespread damage एवं बहुत जनजीवन क्षति कराई छी एट बहुत देइछि त माने जानि परिबो 26 डिसेंबर 2004 रे हितिला तो प्राय 13 कंट्रीज अफेक्टेड हितिले इंडियन ओशन हितिला इंडोनेशिया रे होइतिला रे प्राय 2 लाख पीपल से मान बासहरा होते बहुत किछि क्षय क्षति करा होइतिला ए सुनामी तो रेयर हुए किंतु बहुत क्षति कराए एटा को आमे कोन को डिजास्टर को माने हैंडल करंती ना डिजास्टर मैनेजमेंट हैंडल करें नेक्स्ट आम ओशन विषय जानिले एबे आमे जानिबा कॉन्टिनेंट विषय रे कॉन्टिनेंट्स आर विजिबल ऑन द मैप ऑफ ओशंस आमे जानते कॉन्टिनेंट कौन ना कॉन्टिनेंट होची गोटे लैंडमास माने एटा होची कंटीन्यूअस एक्सपेंशन ऑफ लैंड नहीं हाउ मेनी कैन यू काउंट तुम्हें देखो मैप रे तुम्हें केतेटा अच्छी कॉन्टिनेंट गणिछ द आंसर इज नॉट सो सिंपल ए आंसरटा एते सिंपल नुहे आज दे कैन बी काउंटेड इन सेवरल वेज तुम्हें विभिन्न प्रकार रे काउंट करि परिबो डिपेंडिंग ऑन आवर चॉइस we may list any number of continents between 4 and 7 आमे 4 continent कहि परिबा न 7टा मध्ये continent कहि परिबा but nowadays we actually आमे रेफर करूछु 7 continents कि प्रथमे आमे ताको प्रथमे 4टा continent करा जैतिला गोटे कहैतिला अफ्रीका यूरेशिया अमेरिका एंड अफ्रीका यूरेशिया गोटे अमेरिका अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया हैला North America and South America are generally considered to be two continents as seen as a single landmass. They can also be considered as one. North America और South America को कोटे को जाउतिला सेही भली यूरोप एंड एशिया are generally considered as two continents. आमे तो बर्तमान दीटा continent कहूछु although the map makes it clear that they form a single landmass for historical and cultural regions, Europe's evolution has been very different from Asia's, which is why they can be seen as two continents. तथापि ताको आमे दीटा continent कहउतलो किन सेते बेले ताको आमे single continent कहउतला यूरेशिया एशिया यूरोप को यूरेशिया कहउतला अफ्रीका एंड यूरेशिया Africa or Eurasia means Asia and Europe are generally regarded as two continents but sometimes as one ताकू मध्य बेले बेले one धरा जाउतिला त माने अफ्रीका यूरोप एशिया ये गोटे कंटिनेंट तापर ये तीनटा जदी गोटे हला पुनी अमेरिका गोटे अंटार्कटिका गोटे ऑस्ट्रेलिया गोटे ये हे गला मध्य हमरो चारटा कंटिनेंट एई बडी अपडेट लिस्ट देछि
फाइव कंटिनेंट सेमती कराला अफ्रीका अमेरिका अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया यूरेशिया तापर सिक्स कंटिनेंट्स करागला अफ्रीका अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया यूरेशिया नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका तापर कराला सेवेन कंटिनेंट्स बर्तन जोड़ा आम रेफर करुचे अफ्रीका अंटार्कटिका एशिया ऑस्ट्रेलिया यूरोप नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ये देइछे हमर जो ओलंपिक गेम्स रे आम फाइव मोस्ट कंटिनेंट्स रो एटी पिक्चर देइछे नहीं ये जो तार सिंबलटा ये पांचटा कंटिनेंट्स को बुझाउछे। नेक्स्ट आसला आइलैंड व्हाट इज आइलैंड इफ यू हैव केयरफुली observed the two maps earlier in this chapter जदि तुम केयरफुल ऑब्जर्व करिथिबो you may have noticed तुम निश्चिंत नोटिस करथिबो the continents do not include all landmass some smaller pieces of land are left surrounded by water on all sides they are called islands मान लैंड थी तो चारिपट जाक जो वाटर थी ताको आम आइलैंड कही था कंटिनेंट्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाय वाटर बट बिकॉज दे आर सो लार्ज किंतु कंटिनेंट्स गुड़ाक माने वाटर सराउंडेड हो आइलैंड कहबा कथा किंतु जेहेतु से वेरी लार्ज सो ताको आम कंटिनेंट्स कहूँ और जो गुड़ाक स्मॉल लैंड्स गुड़ाक सराउंडेड बाय वाटर ताको आम आइलैंड कहूँ। There are lakhs of islands माने बहुत आइलैंड्स अच्छी on the planet of very different sizes बहुत छोट बड़ बहुत साइज रो बहुत सारा कौन रही आइलैंड रही एमती कि ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड मन रखियो ग्रीनलैंड हूँ लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड तापरे इंडिया रे मध्य 1300 स्मॉल आइलैंड्स रही दुटा मेजर ग्रुप हो जोटा अंडमान निकोबर आइलैंड आउट बे ऑफ बेंगल रे अच्छी आउटा लाक्षाद्वीप आइलैंड अच्छी अरेबियन सी रे अच्छी है ताको मन रखिबो अंटार्कटिका रे हमर दक्षिण गंगोत्री आमर हेटे अच्छी रिसर्च स्टेशन रही आउ अंटार्कटिका को मध्य आइसलैंड मध्य कहा जाय थे। नेक्स्ट ओशंस एंड लाइफ ओशंस एंड लाइफ्स are vital parts of the environment and affect most aspects of our lives both आम जानी ओशन और कंटिनेंट्स जो आम लाइफ रो vital parts even if we do not notice it जदि आम नोटिस कर नथिबा we have mentioned that oceans send rain देखो आमको वर्षा केमती होची ना ओशन रो आसुची माने सन रो कौन पड़ुची ना हीट रू एभापोरेशन होची एभापोरेशन है कि एटा वाटर साइकिल जरिए हम पुणी कौन पाउचे रेन वाटर पाउचे नहीं व्हिच यू विल फर्दर स्टडी इन साइंस ताको तुमे साइंस रे भल भाव रे पढ़िबो without oceans for instance there would be no rainfall ओशन नथिले कौन से रेनफॉल होई न थांता the earth would be a desert पृथ्वीटा आमर गोटे डेजर्ट हो जाता moreover more than half of the world's oxygen is produced by the oceans flora आउर भी गोटे इंपोर्टेंट कथा मन रख माने अधा भाग ऑक्सीजन आम वर्ल्ड जिते ऑक्सीजन अच्छे अधा भाग ऑक्सीजन ओशंस फ्लोरा रू प्रोड्यूस करा होची व्हिच इज व्हाई दे आर कॉल्ड सेति आम कहूँ प्लैनेट्स लंग्स ताको आम प्लैनेट्स लंग्स बोली कही ओशंस को प्लैनेट्स लंग्स बोली कही The oceans therefore play a crucial role in regulating the climate and sustaining life on earth. Oceans have deeply impacted humanity in many other ways. From early times, people have used oceans, लोक मैंने oceans व्यवहार करते and seek to migrate to other regions. गोटे जगार आउ गोटे स्थान को जीवाई व्यवहार करुले माने सेते बेले जल जल जहाज द्वारा से माने जहाज द्वारा जल पथरे जाउथिले अलगा देश को टू ट्रेड इन ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स माने जे विभिन्न
जिनस द्रव्यर कौन करने किना बिका करने टू कंडक्ट मिलिटरी कैंपेन्स एवं मिलिटरी कैंपेन सब कंडक्ट करुले एंड एज अ सोर्स ऑफ फूड थ्रू फिशिंग एवं माछ धरुले ओशंस हैव आल्सो nourished the cultures of coastal people all over the world. Almost all of them have tales and legends about the sea gods and goddess. ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଉଥିଲା. Sea monsters and treasures from the sea, the ocean's dangers but also their blessings. ଯଦିଓ ମାନେ ଓସନ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥାପି ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ଖୁବ କମ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ, ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଓସନ ଯୋଗୁଁ ପାଉଛୁ. ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଉଛୁ, ବେଶ କରିକି ଆମେ ରେନ୍ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସବୁ କିଛି ଆମର ଓସନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି. ସେଥିପାଇଁ ଆମର ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନେସନ୍ସ କ'ଣ କରିଛି ନା ଜୁନ୍ 8କୁ ୱାର୍ଲଡ଼ ଓସନ୍ସ ଡେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି. ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଏଇଟା ୱାର୍ଲଡ଼ ଓସନ୍ସ ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି. ଆଇ ଥିଙ୍କ ଚैप्टरटी भल भाव बुझी पार्थिब. जोटी भी डाउट्स थी मत कमेंट्स रे लिखिब. तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. ए चैप्टर रो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस शॉर्ट नोट्स तुम एग्जाम प्रिपेयर पई ए परवर्ती वीडियो रे जीव.